evening, namaskar and welcome on Rajneeti on MATV. इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, we welcome you on this program and don't forget you're watching us on Sky 793 and also on YouTube MATV channels and all the W's, that is worldwide, www.matvchannels.com. Last week, if you remember, we were talking about the trouble in Anantnag in Kashmir and firing on pilgrimage, and we are again talking about the same region, Kashmir, but on a different topic. कहते हैं, there is a say in Sanskrit कि there are two type of people. One who always go for good things, productive things, and the other one will always go for destruction. Like, you know, when we invent Parmanu bomb, Anu Parmanu, scientists wanted to use it for good cause, but what we actually ended up doing is create bombs. So we'll be talking on a similar line, but on some human beings who decided to go different ways. But before do that, let me introduce you to our guest today. In the studio, we have Dr. Shabbir Chaudhry, Chairman, South Asia Watch, London. He's a think tank. Welcome to Rajneeti on MATV. Thank you very much. And we have Lakshmi Kaul, who is activist, political activist, and she was with us last week actually. First of all, thank you very much for coming and accepting our invitation and joining us for this program. Welcome. Now, we're going to talk about two different people from Kashmir, and both of them are young. Both of them decided to do something with their life. One belonged to a very educated family, and other will belong to a normal family. But what happened in their life based on what they chose to do with their life. हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की. A few weeks ago in London, few of our friends decided to celebrate or create a hype or whatever you want, protest or celebration, something in relation with a person who was known terrorist, who was declared a part of two world-known terrorist groups. And some people believe that this protest or this gathering could have been also a trial if they could get some more youngsters, recruit some more youngsters who are on the similar thought process. And we are talking about Burhan Wani, the young person who belonged to Kashmir, who could have chosen to work for Kashmir, who could have chosen a good path and could have become a very popular person, but he decided to go on the other path otherwise, and he chose to become a wrong man, a terrorist. But before we start talking about that, I want to tell all our viewers that you can give us a call and participate, share your thoughts. What do you think about it? What do you think what's happening in Kashmir and so on? The telephone number will be shown on our screen. You can always call us after the first break and we'll be more than happy and we'll appreciate your call. Let us have a look at one clip which talks about what happened 1 year ago in Kashmir, which shows his death. Let's have a look at the clip and then we'll talk more about it. And basically what happened is, as soon as that happened, there was lots of tension and there were people actually divided. Somebody was saying something, somebody was supporting, not openly, but they're saying maybe we could have done this, maybe we could have done that, maybe he may have been targeted or somebody used him. There were lots of talk about his assassination or his death. Some people called he was assassinated. I think personally, and many of us think that he died when he was trying to
do the activities which he should not be doing. Lots of people actually supported him because they did not understand his mentality. They did not know actually what he did, and they did not know how good he was in manipulating youngsters and so on, because he was known as a poster boy, poster boy and so on. So we are actually going to look at this. There is a technical problem, but soon we'll have this clip on, and we'll have a look at what happened last year, about a year and a month ago, and how he was killed in fight with Indian armed forces. Do we have the clip? Let's have a look at the clip. But we still have this problem. Lakshmi, you have been part and parcel of fight on behalf of Kashmiri Pandits and in general Kashmiri people, and you know very well about this personality. What do you think of this? Well, hero worship has been going on for a very long time in this world. When you talk about somebody in the same breath as a hero, then essentially that means that you're institutionalizing whatever that person stood for. And now, in the case of this young boy who was radicalized clearly, he was the son of a schoolmaster. So you think that the value system that he would have would be of education, progress, development. But there was hardly that, even in the voice of his own father, who seemed to support the radicalized sort of behavior that he displayed and terrorism. For a lot of young people in Kashmir, whatever is left of the people that were originally there, there's hardly any minorities there now. The minorities from before are now the majority, and they still continue to treat themselves as the minority community. Now, for them to look at Burhan Wani and people like him as heroes is worrying, because that goes out to show that the education system there has been completely paralyzed. I mean that's one thing, and very valid point. That schoolmaster, or I think he was a teacher of physics, he was teaching science. If a teacher, I mean, we rate a teacher, we give them great respect. I mean, a teacher can make it and break it. And if a teacher is supporting that ideology and whatever they're teaching, then it's a dangerous thing. Apart from all the other activities, there's a very dangerous things happening in the valley. So let's have a look at the clip finally, and then we'll talk about it. कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी बनाने पर हमले की चेतावनी देने वाला ये वीडियो जब सामने आया तो लोगों ने 10 लाख के इनामी आतंकी बुरहान वानी को पहली बार देखा। इसके बाद कुछ आतंकियों के साथ क्रिकेट खेलता देखा गया बुरहान वानी। तो खुलासा हुआ कि बुरहान वानी क्रिकेट का दीवाना रहा है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और शाहिद अफरीदी का फैन रहा बुरहान घाटी में कभी टैलेंटेड क्रिकेटर हुआ करता था। इसके बाद बुरहान कुछ आतंकियों के साथ ऐसे देखा गया। दक्षिण कश्मीर के त्राल का रहने वाला बुरहान देखते देखते हिजबुल का पोस्टर बॉय बन गया। घाटी के लड़के बुरहान की पर्सनालिटी को देखकर आतंक का रास्ता चुनने लगे। बुरहान ने घाटी के लड़कों को आतंक का रास्ता चुनने के लिए उकसाया। 10 लाख के इनामी हिजबुल के इस पोस्टर बॉय को अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में शुक्रवार की शाम सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बुरहान वानी कश्मीर में आतंक का सबसे कुख्यात और हाईटेक चेहरा बन चुका था। भड़काऊ भाषण और आतंक के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में बुरहान मास्टर था। कभी स्कूल का टॉपर रहा बुरहान साल 2010 में सिर्फ 16 साल की उम्र में आतंकी बन गया था। पिता स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन बुरहान पर स्कूली तालीम का कोई असर नहीं पड़ा। आतंकी बनने के बाद भी बुरहान अपने घर वालों के संपर्क में था। बताया जाता है कि अपने परिवार से मिलने लड़की का भेष बनाकर जाता था। बुरहान के भाई को सुरक्षा बलों ने उस वक्त मार गिराया था जब वो उससे मिलने की कोशिश कर रहा था। बुरहान को जिस जगह पर मारा गया वो उसके घर से कुछ ही दूरी पर है।
इसका मतलब ये है कि बुरहान पूरी तरह से अपने घर वालों के संपर्क में था और इलाके के लड़कों को आतंकी that he was very much involved in cricket. He loved cricket. So like all the youngsters, he was very interesting personality. However, what bothers me is that he decided to go against all that. He left his house at very early young age and he joined terrorist groups. And his family, he was until his last day, he was in touch with them. He used to meet them and so on. So his family supported him. And I'm sure that his family supported his ideas. Dr. Shabir Chaudhary, how do you describe this personality? Well, thank you. First of all, you have called him terrorist. There's an old saying, one person's freedom fighter is someone else's terrorist. Yeah. So there is a distinction to be made there. Some people regard him not only freedom fighter, some regard him as a hero. Yeah. And then, of course, you said hero worship. Again, there are problems with hero worship and what that can lead to. But as far as I am concerned, when we go to look at the reasons why he decided to leave everything what he was doing and picked up a gun. Right. So circumstances which led to that, what happened to his brother and what happened to him, and what happened in the neighborhood and in Kashmir Valley as a whole. Right. Those circumstances, those injustice and inequalities and oppression which forced him to pick up a gun. Right. That doesn't mean that I support the use of gun. Right. So that's one thing. Secondly, I do not agree with what he did or what he was doing, and there are reasons. And I said in my article that I do not regard him as a hero. Yeah. And I have reasons for that, because I believe in liberal and democratic struggle, peaceful struggle. I know that the use of gun has only created problems for the people of Jammu and Kashmir. Right. Not only in the valley, but also outside valley, and also along the LOC and on the Pakistani occupied Kashmir as well as in IOK. Yeah. So I think it's time that we people of Jammu and Kashmir give a serious thought to this. Is use of gun helping our cause, or is it causing more problems? Right. So that's one thing. Then we have to look at what was he doing. As far as I am concerned, my struggle is for Jammu and Kashmir to become united and independent. His struggle was to join Pakistan. Right. So there's a big difference there. Yeah. My struggle is for liberal and democratic values. His struggle is for Islamic values. Yeah. It's not that I am against Islam. I am a Muslim myself. But at the same time, Kashmir does not belong to, or Jammu Kashmir does not belong to Muslims only. Yeah. It's a multi-religious, multicultural, multi-ethnic state, and we have to maintain that. We cannot force our views on other people. Right? We have to respect views of others, and we hope that others also respect our views. Right. So you can see the differences. Then what is me like? What is you and Lakshmiji? That his father was a teacher. Yeah. So and he was, of course, he went to school. Is it the school system which has failed him, or is it the environment, like religious environment, or influence of outside? Radicalization of the society. Yeah. And again, I know some people won't like it. Money coming from outside to radicalize people and to impose kind of Islam, which is in a way, inverted comma, alien to the Kashmiri society. Yeah. So there are a number of reasons why this is happening, and Burhan Wani was not the only person. There are other people. Intolerance in Jammu and Kashmir is on increase. This is exactly what I was trying to ask you. You know, he's one of many. How do you describe the psychological profile of a young man who could have become a teacher, who could become a scientist, who could become a chemist, but he decided to do otherwise? How do you, this, I think if to solve the problems going in there, somebody has to look into the psychological profile of these people. Before I look at the psychological, let me look at the political reasoning. Yeah. There is a, again, Bhulbat,
many people, especially Muslims of Azad Kashmir and Muslims of the valley, they regard him as a hero. What does Maqbool Bhatt symbol, or what does he stands for? Liberal and secular and democratic society, and for united and independent Kashmir. What does Burhan Wani stands for? So those people are those powers who are managing this struggle, militancy, who are promoting militancy, who are promoting intolerance. They did not go along with the policy of Maqbool Bhatt. So they wanted to create another hero, another hero worship. Because Maqbool Bhatt stood for secular and democratic and liberal society and independent country. So they wanted to say, no, this hero is not right, but they didn't want to say that way. They said, no, let's have another hero. And there's again background to it. Before that, organizations like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed and other Pakistani militant organizations, they were calling the shots in Kashmir. And image was that it was not a Kashmiri struggle, it was imposed on Kashmiris by Pakistanis, militants who were coming from across the LOC. So they wanted to have a smart young man, good looking, very attractive, who wanted to give a new phase, to the struggle. New phase and a new phase as well, using IT and So you're saying that he was sponsored basically, in a way. I wouldn't say that he was sponsored. That may be too strong. What my point here is, the people sitting in Muzaffarabad and in Islamabad, they wanted to create a new hero. They wanted to give this struggle a new phase of this struggle. A local man, smart man, dedicated man, who stood up for values. What? For Pakistan, accession to Pakistan. We have to look at what Hizbul Mujahideen stands for. He was commander of Hizbul Mujahideen. So Hizbul Mujahideen is a brainchild of Pakistan. They are supported by Pakistan. And Salahuddin, who is the supreme commander as well, who is he? Where is he sitting? He's not in New York or in London. Let's face the facts. People may not like it. What he is doing, and he is chairman of this Jihad Council, which has these Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba and many other militant organizations. There is something very interesting, and I was, when I read it, I was actually laughing. I tell you what I read about it, that because he was beaten up by policemen, and I'm sure that if you are from Pakistan or India or Bangladesh or Sri Lanka, policemen beats everybody, because in India, in Bangladesh, Pakistan, police, until very recently, their attitude is like, they are the government. You mean it's not normal? Yeah, it's normal for people to get scared of, when this is unfortunate, but somebody quoted yesterday only that it's really unfortunate that when I see a policeman, this is from India, that when I see a policeman, I'm scared rather than feeling secured. So this is quite a normal thing for policemen to throw their, weight around. That doesn't mean that you decide to do what he did. So I don't think that somebody was trying to justify his action. I don't think. What do you think? What do you think? I think that would be trivializing the role of the police and the armed forces in the valley. You need to understand that the valley has been burning for over nearly 27, 28 years. It is indeed. और जो बुरहान वानी है वो तो आज इन्होंने हीरो बनाया है, but how we were uprooted from our homes. उस समय तो बहुत सारे बुरहान वानी बनने की तैयारी में थे. There was sponsorship of state terrorism from across the border. And it is known to everybody that अचानक से सारे लड़के, young जितने लड़के थे, they were taken across the border for training for 3 months, 4 months. And when they came back, they became they came back as a changed person, as very, very radicalized beings. And the valley has been burning since then. I would disagree, Dr. Saab, that they are trying to, fight a battle and Azadi ki jo ladai hai. I've had enough of hearing that ye Azadi ki ladai, ye Azadi ki ladai nahi hai. If you want to see what Azadi ki ladai means, you have to just go across the border. POJK mein jaake dekhiye what Azadi tastes like. So they have been fooled that you will be given Azadi, you will be able to rule your own, state and all of that. But I would like to challenge the very ideology that these sort of
individuals are trained and these institutions are being created of terror, they are completely against the democratic values. There is nothing like democracy or democratic values. I just want to say something, but before we have to go to break, but just something, you know, in young days, children would be given a काम करो एक गेंद लो and go to that उस yard में चले जाओ और ये गेंद ना जोर जोर से फेंको उसको परेशान करो, you know, to bully somebody they will be given toy and go and harass somebody. In those days we used to give football, even आज भी लोग football किसी को harass करना हो तो उनके courtyard में जाके football खेलते हैं. There are kids do that. Does it sound like, you know, somebody decided to give them guns to go and harass somebody? And is it just a game for these youngsters without understanding what they're exactly doing? They are damaging their own future and they're damaging entire society. We'll talk about it, but after a break. At Leica Mobile, we do things your way. Buy a new SIM with our UK Plan Ultra online and enjoy 15 gigabytes of ultra-fast 4G data and unlimited UK minutes and texts. All of this for the low price of just £12 for 30 days. This 50% off contract-free offer is available on our 4G LTE UK network. Don't miss out on this exclusive opportunity. Visit leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Your data, your way. Leica Mobile. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. I'm Brian of Confused.com. Hey, little fella. Get your free Brian toy when you buy car or home insurance through Confused.com. किस्मत कब क्या करेगी किसको पता है। खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। हिस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ हिस्टन हाइड। फॉर बुकिंग्स कॉल 0208 572 1818। Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You loved India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. मैं रिंग लिए बिना नहीं जाऊंगी। रिंग लिए बिना नहीं जाएंगे तो भटकती रहेंगे इधर उधर। हाई सीजन में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, जो करना है करे, कूचो निकले खटे मरे। मैं अम्ब लेने, मैं अम्ब। Actually, I don't understand what's your problem, huh? कौन की करे बोल। ये सब एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज। हाँ है, एक्सक्यूज है ये। अरे कोई कुछ भी फील करे, मरे जीवे, सुतरो कोल पतासे पीवे। मैं अम्ब लेने है, मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ। आपके लिए कुछ ले आऊँ मैं। कैरेक्टर हो तुम? A1। On Rajneeti, Vitrambat,
हम बात कर रहे थे ब्रेक के पहले कि कुछ बच्चों के हाथ में फुटबॉल थमाया जाता है, कुछ बच्चों के हाथ में क्रिकेट की गेंद और बल्ला थमाया जाता है कि पड़ोसियों के शीशे तोड़ो, और कुछ बच्चों के हाथ में गुलेल थमाई जाती है। लेकिन लगता है कि कश्मीर वैली में और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के हाथ में ये खिलौने की जगह गन थमा दी गई है, AK-47, AK-57, और ये बच्चे जो हैं ये इनको लग रहा है कि हम हीरो बन गए या हम विलन बन गए हैं। इनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये कुछ भी नहीं बने हैं, किसी के हाथ का खिलौना बन के ये खिलाए जा रहे हैं, और एक जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो इनको बस उसी तरह से फेंक दिया जाएगा जैसे कि एक यूज्ड खिलौना थ्रो कर दिया जाता है। डॉक्टर चौधरी, इसमें मैं कुछ कहना चाहता था कि लक्ष्मी कौर ने ये कहा कि आज़ादी की जंग समझ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आज़ादी की जंग किसकी आज़ादी की जंग? क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ादी की जंग है? क्या ये आज़ादी की जंग है या पाकिस्तान के साथ मिलने की जंग है? क्या ये इस्लामी जंग है? आज़ादी की जंग या इस्लामी जंग दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पाकिस्तान इन आज़ादी का जंग मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ मिलकर तो ये आज़ाद हो गए, वो पाकिस्तान वाले तो खुद आज़ाद नहीं हैं। तो हम उनसे देखिए बात ये आती है, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है जो आज़ाद इलाक़ के नाम पर, इन एक्सेशन के नाम पर आज़ाद हुआ हो? मुझे तो पता नहीं है, आज तक नहीं हुआ। तो ये क्या नए तरीके से कुछ करेंगे? फिर यह कि जम्मू कश्मीर में बुद्धिस्ट भी हैं, पंडित भी हैं, हिंदू, डोगरा, दूसरे तीसरे बहुत से लोग हैं। क्या किसी को इत्माद में लिया गया था जी भी हम आज़ादी की जंग शुरू करने वाले हैं? या कुछ लोगों को वहाँ पर बंदूक दे दी कि जाओ जाकर बंदूक चलाओ, मारो। पहले तो नॉन मुस्लिम को निशाना बनाया गया, फिर बाद में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। सो आई हैव अ सीरियस रिजर्वेशन कि इसको आज़ादी की जंग कहा जा सकता है। फिर अगर एक मान के फॉर आर्गुमेंट से अगर हम ये मान लें कि रियासत जम्मू कश्मीर पर 3 लोगों का कब्जा है या कंट्रोल है, ऑक्यूपेशन वट एवर यू वांट टू से, इस्लामाबाद का यानी पाकिस्तान का, इंडिया का एंड चाइना का, तो क्या एक जो ऑक्यूपायर है उसकी गोद में बैठकर उससे असला लेकर, उससे पैसे लेकर, उससे बंदूक लेकर, उससे ट्रेनिंग लेकर दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? क्या उसको आज़ादी की जंग कहा जा सकता है? और इज इट प्रॉक्सी वॉर? व्हाट इज इट? या तो ये होना कि ठीक है भी आप कहें, आपको जो भी बात होती है आप ये करते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, ओके, वेयर इंडिया इज रॉन्ग डू अपोज इंडिया, डू कंडेम इंडिया व्हेन इंडिया इज रॉन्ग, डोंट हेजिटेट, बट व्हेन पाकिस्तान इज रॉन्ग डोंट शाई अवे। पाकिस्तान में जो गलतियाँ कर रहा हो रही हैं, मिसल कल परसों एक मुदस्सर अहमद का नाम का आदमी है, वैली ऑफ कश्मीर से है, जो रजौरी में पाकिस्तानी बम से मारा गया। मैंने इसको लगा दिया सोशल मीडिया पर भी, इस मुसलमान को इन पाकिस्तान की गोली ने ख़त्म कर दिया, क्या ये शहीद है? बजाय इसका कोई जवाब देने के उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो मतलब ये हुआ कि जो आदमी पाकिस्तानी गोली से मरेगा वो शहीद नहीं है, जो हिंदुस्तानी गोली से मरेगा तो वो शहीद है। सो व्हाट आर दीज कॉन्ट्रडिक्शंस? आर वी फाइटिंग? ये आज़ादी की जंग है या ये जो फसाद पैदा कर दिया गया है? वी आर फाइटिंग ईच अदर, किलिंग ईच अदर। फिर ये बात है, ये अभी बुरहान वानी की बात हो रही थी, इसके 21-22 ईयर्स का था ये मिलिट्री से शुरू हुए थे, कितना अर्सा हो गया। तो व्हाट दिस मीन्स इज कि ही वाज बोर्न, ये पैदा उसको तो हुआ जब ये मिलिट्री से चल रही थी, उस माहौल में ये पला बड़ा। All he is seen is guns either from this side or that side, oppression, running around। ये देखिए उसका भी कसूर नहीं है ना, एक एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। तो ऐसे में लोग जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि क्या भाई हमें क्या कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाएगा हिंदू लोगों ने हम पर कब्जा कर लिया, हिंदू लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमने हिंदू लोगों से बदला लेना है। मेरी स्ट्रगल किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, माई स्ट्रगल इज फॉर जस्टिस, against injustice, against extremism, against intolerance and oppression, inequality। तो ये मजहब की जंग बनाकर पेश कर रहे हैं। I'm sorry, this is not आज़ादी की जंग नहीं है ये। Do you think कि कहीं पे ये इन्होंने मतलब मान लीजिए कहीं पे शुरू जब इन्होंने किया तो they might have thought कि हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, and then they started drifting away कि उनको ये पता ही नहीं था कि उनको ये पता कि हमने लड़ाई करनी, ठीक है, मगर उनको ये नहीं पता था कि वो लड़ाई किसके खिलाफ कर रहे हैं, whether they fighting against the government, whether they fighting against the policeman और वर्दी वाला जो भी दिखे उसके अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, या फिर वो लड़ाई कर रहे हैं हिंदू के खिलाफ, या फिर वो लड़ाई कर रहे हैं आपको लगता है कि वो they started on a right note and then they started drifting away? I think I wouldn't say कि they started on the right note। ये मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने शुरू किया था, जो लड़के गए थे जिन्होंने बंदूक ली, मे बी दे वर इमेच्योर पॉलिटिकली, हमने सोचा हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो पीपल जो ब्रेन बिहाइंड उनको पता था कि एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। अगर ये होता है कि इसको आज़ादी की जंग बनानी है,
Why they have to take guns from Islamabad? Why they have to get training from Islamabad? Why they have to take money and directions? And उसको आपने कहा दिया वो ज़्यादा है, किस तरीके से ज़्यादा है? फिर दूसरी बात ये होती है कि आपने वहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं रहते. Did you take people, Muslims of, let's put it this way. Did you take Muslims of Valley of Kashmir into confidence? Did you take Muslims of Jammu into confidence? Did you take Muslims of, non-Muslims of Valley and non-Muslims of Jammu into confidence? Same goes for Ladakh. तो ये नज़र ये आता है कि it was एक क्लोज लोगों ने सर्कल था, ग्रुप ऑफ पीपल थे, they thought what they are doing is right. और उनको indoctrinate कहाँ किया गया? Across the border, across LOC. And those people who gave them this ideology, this militancy, this training, they had other agenda. And unfortunately, people won't like it. But do I care? Their idea was to engage India in Kashmir, to keep bleeding India in Kashmir. Why? To keep उसको जो होता है उसको divert, to one again एक बात ये भी आती है कि जो 1971 में हुआ था, to take revenge of that. And this is not only a revenge against India. Take it from me. This is a revenge against people of Jammu Kashmir as well. उनको ये एक बात ये भी आती है अभी 1965 में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था जब ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था. ठीक है, लेट्स सॉर्ट देम आउट. तो ये कौन सी हमदर्दी है, कौन सा भाईचारा है कि हमारे यूथ को मरवा रहे हैं? चलें जी 70,000 मरा या 80,000 मरा या लाख मरा है, नो वन हैज गॉट द करेक्ट डेटा. लेकिन फैक्ट रिमेन्स टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इनोसेंट पीपल हैव डाइड. Women suffered, rapes हुए हैं, custodial deaths हुई हैं. I accept that, and मैं condemn भी करता हूँ. लेकिन does it mean that we continue with it? Is it not time to change the strategy? Tell me something. There is always this talk, that and most of the time, whether everybody says clearly or not, but it seems that all the terrorists or whoever are fighting, they want to become part of Pakistan. Eventually, I mean, what Burhan Wani was saying, the same thing, that we want to get out of the India. And tell me about what is the situation in Pak-occupied Kashmir. I mean, we never discuss this thing. We don't know what's happening there. There is no media coverage about this. Tell me what's happening there. What people are happy? Is everything fantastic? Is there a development? Is there industries flourishing? Tell me something about Pak-occupied Kashmir. Let me say this. One person from Srinagar went to Muzaffarabad. Okay. And when I spoke to him, he said, we are between 50 and 100 years ahead of you people. Okay. Despite all the militancy and जो भी गड़बड़ हो रही है, मारदाड़ हो रही है, इसके बावजूद जो पैसा डेवलपमेंट पर लगना चाहिए था वो दूसरी चीज़ पर लग रहा है. Despite that, उसने कहा कि हम कम से कम 50 साल हम आपसे आगे हैं. Okay. तो we are far behind. आज़ाद नाम कोई चीज़ नहीं है. आज़ाद नाम रखने से आज़ाद नहीं हो जाता इंसान. Believe me कि हम बहुत पीछे हैं और लोग हैप्पी नहीं हैं. अब आज़ादी से इसे देखने कि मैं अगर बात करता हूँ पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ, आई एम नॉट एंटी पाकिस्तान, आई एम एंटी पाकिस्तान कश्मीर पॉलिसी. टू डिफरेंट थिंग्स. अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आती तो ये मेरा कसूर नहीं है ना. तो उसका सजा मुझे क्या दी जा रही है? दे हैव कैंसल्ड माई आइडेंटिटी कार्ड. आई कैन नॉट गो बैक टू पाकिस्तान. They have frozen my bank accounts. So this is the thing. Tell me more about this, Pak-occupied Kashmir. What's happening? I mean, like we talk about what's happening in Kashmir every day, almost, yes, but nobody talks about what's happening there. There is no media coverage. I mean, many a time I wonder that if the people of Kashmir, Indian Kashmir, if then they can see the comparison, if they can see the true picture, that what exactly they're going to get, just in case if India decided, you know what, go. If that happens, what they're going to get, and that's very important. That they should see the comparison. उनको पता चलना चाहिए कि हम जो ख्वाब देख रहे हैं, हम जो सपने देख रहे हैं कि हम अगर यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे, if we go and become part of Pakistan, तो हमारा क्या होगा? अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि ये मैंने अपनी किताब में एक आदमी का इंटरव्यू शाया किया था जी, जो इस तरफ से आपकी तरफ से उस तरफ गया था बंदूक लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, फिर उसके बाद वो वापस आना चाहे, वापस नहीं आ सकता. उसने ये कहा था कि जो सफरिंग हमने यहाँ पर आकर देखी है, आज़ादी के नाम पर जो हमारे साथ हुआ है,
वो कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, इवन इफ दैट मीन्स स्पेंडिंग मनी। वो तलाश कर रहा था कोई पैसे इकट्ठे हो जाएं, वो जो होता है जो एजेंट्स होते हैं उनको देकर किसी तरीके से निकले। उसने कहा कि अगर ये आज़ादी है और वो गुलामी है, आई रेदर लिव इन दैट गुलाम कश्मीर रेदर देन लिविंग हियर। दैट आई थिंक एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। और जो अगर जिन लोगों को अगर यही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर आज़ाद है और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ना वो गुलाम है, when उधर जाते हैं फिर भागकर वापस क्यों आ जाते हैं? Thousands of people have returned. Right. Why? We have a caller. Let's see, what the caller has to say. Hello. Hello. Hi. Who is this? जी असल मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्यों नहीं उनको लोगों को ही हक दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं? हम दूसरी बातें लोग करते हैं जी। जो कश्मीर में ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग हैं उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता कि अपनी किस्मत का फैसला खुद करें? Can I come on to this? Yes, please. देखिए, आपका नाम जनाब? जी मेरा नाम मोहम्मद सादिक खोखर है। और कहाँ से बोल रहे हैं आप? लेस्टर से। लेस्टर से जी। मोहम्मद सादिक खोखर साहब, असल में एक मैकेनिज्म यूनाइटेड नेशन ने तैयार किया था जिसको यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन कहते हैं 13 अगस्त 1948 की। उसमें क्लियर कहा गया था कि सबसे पहले एक तो सीज फायर होना चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज कीप ऑन। ये लॉस्ट द कॉल बट लेट्स अच्छा, गो अहेड या। सबसे पहले सीज फायर लाइन followed by withdrawal of all Pakistani forces from Pakistani occupied Kashmir, Gilgit Baltistan, and वो ट्राइबल इन्वेडर्स थे वो भी सारे बाहर निकलेंगे, वो पाकिस्तानी भी जो वो केम देयर फॉर पर्पस ऑफ फाइटिंग। ये सब जब विड्रॉ कर लेंगे उसके बाद इंडिया विल बिगिन टू विड्रॉ बल्क ऑफ द फोर्सेस व्हिच मींस मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस। अगर पाकिस्तान ने फौजें निकाल ली हैं और हमें अभी तक इल्म नहीं हुआ, देन इंडिया इज गिल्टी फॉर नॉट हैविंग अ प्लेबिसाइट। The fact remains that Pakistan has not withdrawn. तो प्लेबिसाइट टेक नहीं कर सकते। If you can persuade Pakistan to withdraw, maybe India can be put under pressure to hold a plebiscite. Let people decide. I would also like to say कि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि लोगों की मर्जी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ लोग हैं कहाँ? ये तो काफिरों के खिलाफ की लड़ाई थी, तो जो हम थे हमें तो निकाल दिया। जो वहाँ की कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है पूरी की पूरी स्टेट है जम्मू कश्मीर, और उसमें जो कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी हिंदू जो माइनॉरिटी थे वो घटते 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 अब इतने कम हो गए कि हार्डली एनीबडी फ्रॉम आवर कम्युनिटी इज देयर। तो कोई हिंदू है नहीं। हाल ही में लास्ट ईयर जब बुरहान वानी का किस्सा हुआ तो उस समय पे जो बचे कुछ और जो कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे। हमने खुद वी हैड बीन इन कॉन्टैक्ट विद फैमिलीज जिनको घरों में मंदिरों में होलअप करके उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे। अगर आप इतने भाईचारे से रहते हैं वहाँ पर वैली में, मान लीजिए कि कश्मीरियत है वहाँ पर, कश्मीरी लोगों की बहुत इज्जत है, जम्मू और लद्दाख की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे भी परपेचुअल वॉर है। और ये कौन फैला रहा है? वहाँ से बार बार there is an interference and there is insurgency from constant interference from Pakistani side. Right. Or there is always trouble being sort of seeped in from the border areas. Right. तो जो अगर भाईचारे से रह रहे हैं वहाँ पर कश्मीरी लोग, तो फिर आप पत्थर क्यों फेंक रहे हैं अपने भाइयों के ऊपर और अपने साथियों के ऊपर जो कि आप जिनको काफिर बुलाते हैं? एक तरफ से आप छाती पीट पीट कर रोते हैं। हमने कई YouTube पे वीडियोस देखे जैसे हम आपको घर वापस बुला रहे हैं, मगर किस चीज़ के लिए? मेरा अपना घर खाली 2-4 महीने पहले ही हमारे जो आखिरी रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी थी उसको जला दिया गया। तो किस्मत अच्छी थी कि कोई घर में था नहीं उस समय। लेकिन अगर इस तरह से आप लोग साथ में मिलकर डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपका आगे फ्यूचर क्या होगा, then it is really a big question mark कि what exactly are you aspiring for? तो ये आज़ादी के जो आपको ख्वाब दिखाए गए हैं उसमें जो I would also like to say कि जो वहाँ के यूथ हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो जब हमें हमारे घरों से निकाल दिया था, मिलिटेंसी शुरू हुई, उसके बाद में वो लोग पैदा हुए हैं। मगर इस दौरान में क्या ये कहीं पे भी दुनिया में बाहर गए हैं? Have they left the confines of the village or the city that they have lived in? खाली वो पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए हैं और वापस आए हैं and they have lived in that constant state of fear and hatred. जब आप नफरत के उस पे खड़े होकर पैदा हुए हैं और उसी में पले बड़े हैं और आपने दुनिया देखी नहीं है, तो then that is what your world is going to be. और आपको जन्नत के ख्वाब दिखाए गए हैं, आपको और कोई तरह का ख्वाब नहीं दिखाया। आज़ादी चाहिए आपको ये सब चीज़ों से, लेकिन what is the aspiration that is being seeped into your mind is
I just want to sum up that the caller's question that he was saying कि कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं पूछा जाता. कश्मीर के लोगों को पूछा गया है, नहीं पूछा गया ऐसा नहीं. और जो यूनाइटेड नेशंस ने जो एक वो बनाया था, बहुत आसान तरीका था कि पाकिस्तान अपनी सेना वहाँ से निकाल ले और उसके बाद में वहाँ पे जो है वो वहाँ के लोगों से, जी हाँ, बट इट डिड नॉट हैपन, इट नेवर हैपन. और अभी भी वो बात नहीं हो रही है. तो वो एक सवाल था जिसका जवाब आपने दिया. थैंक यू वेरी मच. एक और शख्सियत है इस सारे झगड़े के झंझट के झमेले के चलते जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से. At Leica Mobile, we do things your way. Buy a new SIM with our UK Plan Ultra online and enjoy 15 gigabytes of ultra-fast 4G data and unlimited UK minutes and texts. All of this for the low price of just £12 for 30 days. This 50% off contract-free offer is available on our 4G LTE UK network. Don't miss out on this exclusive opportunity. Visit leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Your data, your way. Leica Mobile. Pure heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. I'm Brian of Confused.com. Hi, little fella. Get your free Brian toy when you buy car or home insurance through Confused.com. किस्मत कब क्या करेगी, किसको पता है. खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर. हिस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग. मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ. हिस्टन हाइड. फॉर बुकिंग्स कॉल 0208-572-1818. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. मैं रिंग लिए बिना नहीं जाऊंगी. रिंग लिए बिना नहीं जाएंगे तो भटकते रहेंगे इधर उधर. हाई सीजन में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, जो करना है करे. कूचू निकले खटे मरे. मैं अम्ब लेने. Actually, I don't understand what's your problem, huh? कौन की करे बोल. ये सब एक्सक्यूज है. एक्सक्यूज है ये. अरे कोई कुछ भी फील करे, मरे जीवे, सुतरो कोल पतासे पीवे. मैं अम्ब लेने हैं. मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ. आपके लिए कुछ ले आऊँ मैम. कैरेक्टर हो तुम. A1. On Rajneeti on MATV with Ram, but we were discussing about some personalities, right or wrong, hero or villain, and we are also talking about another person who is related to Kashmir Valley. But before that, Dr. Chaudhary, I want you to tell us more about this United Nations thing. ये अभी जो राजकुमारी की बात हो रही थी, मैं इसे एग्री करता हूँ कि लोगों को मौका मिलना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन यह है कि जो रेजोल्यूशंस पास हुए थे लेट 1940s,
क्वेश्चन ये आता है कि आर दे रेलिवेंट अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन। एक जो एंगल से लक्ष्मी जी ने बता दिया कि किस तरीके से पंडित्स को, दूसरे नॉन मुस्लिम्स को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। अब कोई कहाँ रह रहा है किसी को पता नहीं है। दूसरी तरफ हमारी तरफ का जो कश्मीर है, यानी जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ है, पाकिस्तान ने वेरी जनरसली उसको वायलेट किया। Tens of thousands of Pakistanis have settled in Gilgit-Baltistan. तो वो तो वहाँ से डेमोग्राफी टोटली बदल गई है। तो वो कैसे आप होल्ड करेंगे? क्या सबको पहले बाहर निकालेंगे? तो ये नहीं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। द एनवायरनमेंट हैज चेंज, वी हैव टू फाइंड अ न्यू मैकेनिज्म टू ascertain the views and the will of the people of J&K. But before that, militancy has to stop. Has to stop, yes. We have to create the atmosphere and environment. We have another caller online. Let's see who is this. Hello. Hello. I'm Simmi calling from Hertfordshire. Hi Simmi, thank basically, you. मैं कश्मीर से हूँ, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी please go ahead. Basically ये है कि वहाँ पे जब मैं छोटी थी और हम कॉलेज जाते थे तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, नेबर्स बहुत अच्छे थे। तो कहते हैं कश्मीरियत काफी वहाँ पे हर घर में ऐसा था, मतलब बहुत आपस में भाईचारा था, बहुत अच्छा था। लेकिन उस टाइम पे मतलब 1990 से पहले कभी हमने आर्मी देखी नहीं थी कि आर्मी होती क्या है, यू नो। तो वहाँ पे बिल्कुल कोई, सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस होती थी कभी कभी ट्रैफिक के लिए इधर उधर, बाकी कोई वहाँ पे आर्मी का कोई नाम ही नहीं था, नामो निशान नहीं था कहीं पे। तो मैं ये कहती हूँ क्योंकि मैं वहाँ जन्मी हूँ, वहाँ रही हूँ। तो इसके अलावा एक और मैं पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि 1990 के बाद जब वहाँ पे इंसर्जेंसी हुई तो उसका जो सीड बोया गया था वो पहले 10 साल लगभग हुआ था, मतलब 84 के बाद के टाइम पे। तो वहाँ पे काफी वो अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेनिंग हुई, यू नो। और वहाँ जमात इस्लामी जो है वो गाँव में, सिटीज में काफी उन्होंने मस्जिदों में फैलाया था। तो हमारे अपने नेबर्स ने बोला कि अफगानिस्तान जो है उसका जंग जो है वो खत्म हो रहा है, तो इसके सारे जो आर्म्स बचे कुचे हैं वो यहाँ कश्मीर आ रहे हैं। तो मुझे पूरा याद है, हमारे नेबर ने बोला था कि वो चारे शरीफ से एक वहाँ पे बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ से लाखों की तादाद में AK-47 तो लोग लेके आए थे श्रीनगर। तो एक प्रोसेशन हुआ था। तो ये मुझे पता है। और वो काफी नेबर्स जो थे वो कहते थे कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। और ये भी हमारे मुस्लिम नेबर्स को पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन मस्जिदों में ये था कि यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा बनाना है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ अपने जो है लिसनर्स को। दूसरी बात ये है कि जो हम कहते हैं कि ऑक्यूपायर्स, अब जो डॉक्टर साहब हैं उनको पता है, जो POK में जो है शारदा जैसे है, नारदा शारदा, वो तो हमारे कश्मीरी पंडित्स का पुराने जमाने के मंदिर हैं, श्राइन्स हैं। तो और अगर ये जैसे मीरवाइज है, जिलानी है, ये सारे ऑक्यूपायर्स हैं, ये ऑक्यूपायर्स हैं क्योंकि ये इतने सालों 700 साल पहले कश्मीर आके इन्होंने ऑक्यूपाई किया हमको, ना कि हम ऑक्यूपायर्स हैं। तो ये हम क्लैरिफाई करें जो भी देख रहे हैं प्रोग्राम कि ये जो कहते हैं ऑक्यूपायर्स, डॉक्टर साहब को खुद पता होगा कि अगर हम जेनेटिकली देखें तो हम सब कश्मीरी हैं, ठीक है। तो हमारा सारा शारदा और नारदा के साथ अटैचमेंट है। तो ये ऑक्यूपायर्स जो हैं वो है जिलानी और मीरवाइज और बाकी जो हैं, they are all from outsiders. Thank you very much for your call and we appreciate, and you brought a very good point। जो अफगानिस्तान में लेफ्ट ओवर था वो सारा डंप किया गया कश्मीर में। डॉक्टर साहब, what would you say to this? देखिए, इसमें एक बात यानी बड़ी वैल्यूबल बात उन्होंने कही है कि मिलिटेंसी शुरू होने से पहले आर्मी जो है ना वो विजिबल नहीं थी जी। और कुछ हमारे जो क्रिटिक्स हैं ऑफ मिलिटेंसी वो कहते हैं कि आर्मी को या BSF को हमारी बहू बेटियों की बेडरूम तक कौन लेकर गया है, ये बंदूक लेकर गई है जी। तो बंदूक पहले आई है, बंदूक इस्तेमाल हुई है, उसके नतीजे में आर्मी आई है। एज ए रिजल्ट जो जितनी भी मारदाड़ हो रही है या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उस वजह से हुई है। तो रूट कॉज क्या हुआ? द गन्स, ठीक है ना। तो गन जब तक रहेगी तो ये चलता रहेगा। और ये गन आई जो अफगानिस्तान, मतलब ये आई तो ये तो मेरे ख्याल में ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये बहुत जिन लोगों ने, देखिए ये जिहाद जो है ना, यानी मुझे पता है कि लोग पसंद नहीं करेंगे, इट हैज़ बिकम अ बिजनेस जी, ठीक है ना। कुछ लोगों को कहा जाता है कि ठीक है जी आप सीधे जन्नत में जाएंगे जी। अब मुझे नहीं पता कि बेगुनाह लोगों को मारकर वो जन्नत में जाएंगे या नहीं, दैट ओनली ऑलमाइटी नोस जी जी। लेकिन ये बात है कि इट हैज़ बिकम अ बिग बिजनेस एंड द पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वो कहते हैं कि ये चलता रहे।
वो अफगानिस्तान की जो जंग थी या मिलिटेंसी थी या जहाद थी वो खत्म हो रही थी, वो इतने अनएम्प्लॉयड लोग कहाँ जाते, वो पाकिस्तानी सोसाइटी को खराब करते, so they had to be sent somewhere. And Kashmir was there, so they did that. And they were waiting for that. They were waiting for that. अगर यहाँ से खत्म हो जाएगा किसी और जगह जाएंगे. किसी और जगह जाएंगे. I want to talk about another person. We don't have much time to show the clip, but I want to talk about जो जनरल गोगई. आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब ये स्टोन पेल्टिंग हो रही थी तो वन ऑफ ऑफिसर ऑफ मेजर नॉट जनरल मेजर इंडियन आर्मी टू सेव पीपल ही अप्लाइड अ टैक्टिक व्हाट ही डिड इज कि जो पत्थर फेंक रहे थे उनका जो सरगना था उसका एक इंटरव्यू में उसने ये कहा कि मैंने देखा कि वो एक बंदा है जो लोगों को उकसा रहा है और भारत विरोधी नारे लगा रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको ही अगर हम पकड़ लें तो शायद इन लोगों की जान बच सकती है. एंड इवेंचुअली दे कॉट होल्ड, ही वाज ट्राइंग टू रन अवे ऑन अ मोटरसाइकिल, दे कॉट होल्ड ऑफ हिम और उसको वो जीप के आगे बांध के उन्होंने वो सारे लोगों को उस जीप में डाल के निकाला. तो उसके बारे में बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज भी किया. एंड देयर वर मेनी पीपल हु वर सिटिंग इन देयर बेडरूम्स, एयर कंडीशन घरों में बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे थे. सम पीपल, देयर वर मेनी ओपिनियंस. आप लक्ष्मी, व्हाट वुड यू से? I mean, look at the contrast between two young people. One who was trying to create, trouble, insurgency, who was trying to kill people, and on the other hand, this guy tried his best to save people. So, what would you say? I would say, well, the thing is that when you're in a situation of conflict and you're trying to reduce collateral damage, you do anything that it will take to ensure that happens. Now, उस समय जब आप when you are surrounded by people with AK-47 and पत्थर and as opposed to on the other side you have a छर्रा, चिड़ी मारने का छर्रा, ठीक है? तो आपको अगर यदि उनकी भी जान बचानी है, इनकी भी जान बचानी है और अपनी भी जान बचानी है, what do you do? I'm not saying that is justified. Creating human shield is not an uncommon practice in conflict. And it was not a unique idea that he did it for the first time. बहुत तरह के देशों में, बहुत देशों में human shield बनाई जाती है. सोचने की बात है कि उस समय डैमेज क्या हुआ? Did anybody attack that person who was tied to the jeep? No. Did anybody get killed? No. Did anybody throw stones? No. So that means that worked. Unfortunately, it worked. So what are we trying to sort of defend or celebrate here? I wouldn't say that this major was a hero, but he did, in that situation where they're trying to exercise maximum restraint, they did what it... I just want to say something. I mean, if we go 100 years back, 200 years back, in those days when there was hand-to-hand combat or, people used to use chariots and elephants and so on, they will always wanted to get hold of the leader, जिसको सेनापति कहते थे और जो मेन होता था या किंग, कि उसको मार दो या उसको पकड़ लो तो ये बैटल अपने आप खत्म हो जाएगी. So do you think that it's not something new if they realized and they recognized that he is the one who is actually troublemaker and who is leading all this trouble, who is actually उकसा रहा है, जो उनको प्रॉम्प्ट कर रहा है कि चलो पत्थर पे को ये करो वो करो, अगर इसको ही पकड़ लें हम तो ये सारी लोगों की जान भी बच जाएगी. अदरवाइज दे वुड हैव टू ओपन द फायर एंड गॉड नोस हाउ मेनी पीपल वुड हैव किल्ड. डॉक्टर चौधरी, व्हाट वुड यू से? मेरा व्यू इसमें डिफरेंट है. अब क्वेश्चन ये आता है कि पहली बात है कि टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज देवर ना AK-47 वहाँ पर नहीं थी. देयर वर नो पीपल फ्रॉम प्रोटेस्ट. Yes, I'm coming to that. So AK-47 नहीं थी, rule that out. I believe कि people of J&K have right to protest. But in my considered opinion, they do not have right to violence. Two different things. हमारे यहाँ unfortunately ये समझ लिया गया है कि right to of protest also includes right of violence, meaning आपके सर में पत्थर मार दिया, इनको गले से पकड़ लिया, किसी का शीशा तोड़ दिया, किसी को घर में आग लगा दी, ये राइट आपका राइट नहीं है. यू आर इंक्रोचिंग समवन एल्सेस राइट. जो यहाँ पर किया गया कि दिस इज ए केस ऑफ ए ह्यूमन शील्ड. यहाँ पर क्वेश्चन यह था कि क्या ये लोगों को बचाने के लिए था या अपने आप को बचाने के लिए था. ठीक है ना, आपने एक आदमी को पकड़ा, आपके पास बंदूक है, ताकत है, आपने उसको पकड़ लिया, बांध लिया, उसका मजाक बना दिया. हैज़ दिस इनहांस द रेपुटेशन ऑफ इंडिया? इन माय व्यू इज नो. ये बैकफायर किया गया है और ये मैं समझता हूँ कि आर्मी के खिलाफ भी गया है और स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी गलत है. ये नहीं होना चाहिए था
क्योंकि उस आदमी को मजाक बना दिया गया ह्यूमन शील्ड। वो सारी जगहों पर ये ना इंडिया की मैं समझता हूँ बेइज्जती हुई है और दिस प्रैक्टिस शुड स्टॉप एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को पत्थर मारने की इजाज़त होनी चाहिए। हर जगह पर राइट्स होती हैं, मसलन जर्मनी में अब G20 की हुई है, लोगों ने पत्थर मारे सब कुछ हुआ लेकिन गोली नहीं चली, ठीक है ना। सो क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए। The situation in Germany or other places were different. नहीं, क्राउड में बात ये कर रहा हूँ कि जो लोग मार रहे थे वो पत्थर मार रहे थे, गोलियां नहीं चला रहे थे। तो दे शुड बी क्राउड मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए लोगों के पास। But then in such situation when a crowd of 500-1200 people are pelting the stones, right, these people did not want to open the fire, so the only alternative was somehow stop them to do what they're doing without killing somebody. What has the Indian government done? They have given a compensation of 10 lakh? It was decided by some local court, okay, but he was awarded. That means even the administration thought it was wrong. Yeah, but then it is. What do you think, Lakshmi? Well, I would like to take you back a bit to last year when Burhan Wani was killed. वहाँ पर जब आपका कोई हीरो सेलिब्रेट करते हैं तो हीरो की क्या निशानी होती है कि आपकी तरक्की हुई, you've prospered, you've done a lot of good things and आपने दुनिया का भला किया है whatever. मगर इनके होते हुए भी और इनके जाने के साथ भी the whole valley was paralyzed. अच्छे खासे बागों को जला दिया गया. Whoever was pro development was actually punished for being pro democracy and pro development. So to my mind, rather than deflecting the issue to talking about what the army does, what it doesn't do, I would not justify throwing stones at all. Patthar bhi, I agree with that. No form of violence should be there. But to understand that why the army is in the valley, first of all, you need to understand the ideology behind why these Burhanwanis are created. It was not just one Burhanwani. There have been many others. And when you talk about justice, then I would like to say that I have been waiting for justice for a very long time. An entire generation has now grown up, is also now in that position where they do not recollect what actually happened, and it is fast, that memory is fast fading. So I'm still waiting on justice. Has that been delivered? Can I just conclude that? Justice for not only Muslims, justice for all. Justice for Kashmiri people, basically. All Jammu and Kashmir. I will say one thing, Dr. Chaudhary and Lakshmi. It seems that there are three parties. One is that bachcha, जिसके हाथ में गेंद, फुटबॉल, क्रिकेट का बैट, वो लट्टू या गिल्ली डंडा देने की जगह उसके हाथ में हथियार थमा दिए। दूसरा जो है वो जिन्होंने हथियार थमाए, और तीसरा जो है वो लोग हैं जिनके समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, राइट? सो when there are three parties and all their thought process, they're going in a different direction. How do you think or how do you see this coming together? जो तीन घोड़े तीन तरफ जा रहे हैं, उन तीनों को एक साथ, do you think it is possible to bring them? देखिए इसमें जाने बड़ा कम रह गया, लेकिन इसमें आप जो सिचुएशन है ना, is it getting better? Answer is no, it's getting worse. तो इसका मतलब ये है कि something new has to be tried. अब ये है कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है, मारदार ज़्यादा हो रही है, LOC पर भी हो रही है, इनसाइड भी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि current strategies and policies are not working. Something new has to be tried. सिर्फ मारदार से मसला ख़त्म नहीं होगा। AK-40 या जो भी बंदूक कोई भी वो उसके यूज़ से हल नहीं होगा। Outside interference has to stop. लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि yes, you have grievances, those could be settled, discussed and settled by not using gun or stones, by sitting down and talking. I think we've talked enough. There is also the role that the international fraternity plays in this. We couldn't talk about how Burhanwani has also been attempted, you hinted on it, that he's been tried to be celebrated in the UK. A lot of funding also goes from collections by a lot of terrorist sympathizers in the UK, as well as the ideological sort of warfare is also being harbored in the West, as opposed to just in Pakistan. So I would like to appeal to the entire international fraternity and people living in Jammu Kashmir and in Pakistan and in the Pakistan occupied Jammu Kashmir area.
start speaking up against terrorism. It is not doing anybody any good. I said it the last week also. ये जो आतंकवाद का जो साथ देने में किसी की कोई भलाई नहीं है. लोग खत्म हो रहे हैं. Ordinary people are suffering and they will continue to suffer because it is not in anybody's interest, in those people who are causing this conflict. It is not in their interest to be working. Let me thank you very much, Dr. Chaudhary. Thank you so much. लास्ट बात ये कहूँगा कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो जो है वहाँ पर बंदूक चला रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं. What about those who are sitting in society like Britain and supporting? Is there any legal problem there? That's a very valid point. Maybe we'll continue this again in coming time. But before we go away, there are two sides. One is, you know, an educated person who can think, who can talk, who can look at various options. And then there is one who is the spoiled child, who has lost his track. And who do you support? That is up to an individual. कहते हैं कि सोसाइटी लोगों से बनती है, लोग सोसाइटी से नहीं बनते. We will leave it to you. राजनीति का प्रोग्राम आज यहीं समाप्त होता है. अगले बुधवार को फिर मिलेंगे. तब तक के लिए have a very good night. Stay vigilant. Look after